म्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो अपने आप को, सब लोग म्यूट करो, म्यूट करो अपने आप को। ए कौन, ए लकी, लकी राज, लकी राज। If you make sound, if you scribble, all the names are on the screen. So don't think that I'm very clever, I can disturb the class and get away with it. It's not like that. If you scribble on the screen, okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. मॉर्निंग। कैसा हुआ था तुम लोग का टेस्ट? अच्छा हुआ था? हेलो। Yes, ma'am. So we'll continue the chapter. It's very funny chapter. You can see how the blame is being transferred from one person to the other. So what did the bricklayer say when he was called to the king? बताओ कोई, bricklayer ने क्या बोला था? What did the bricklayer say when he was called to the king's court? So he could not focus on his work. He could not He could not Focus on his work. focus on his work. को एक आदित्य राज आंसर करो। एक बोलो आदित्य राज आंसर करो। He could not focus on his work. Why? What was the reason? Because he got distracted by Because his mind were disturbed when the lady go to the shop. the lady. What? How did the lady disturb him? By making sounds from her Anklings jingling. जिंगलिंग मतलब कि वो झनझनाहट का जो आवाज होता है, और एंकलेट मतलब ब्रेसलेट जैसा। मैं yesterday I got confused कि वो पैर में पर, लेकिन anklet actually means bracelet. It's one on the hand, कलाई में जो पहना जाता है। तो how was this merchant disturbed? The merchant was disturbed by the bricklayer was disturbed by the sound of jingling of the anklet. उसका जो ब्रेसलेट था, चूड़ी था, उसमें से जो आवाज आ रही थी, उससे वो डिस्टर्ब हो गया। तो अब जो है bricklayer, merchant put the blame on the bricklayer, and the bricklayer put the blame on the lady. And whom did the lady put the blame on? Merchant father. Anuj answer. Anuj. Chalo, Anuj answer. On the हाँ. Lady put the blame on the. Hello. gold I'm seller. goldsmith. I'm goldsmith. Goldsmith. Goldsmith means what? I'm Sunar. The one who makes gold. A man who sells gold. Yes, a man who sells gold and jewelries made of gold. So you know who is a blacksmith? Yeah, ma'am. Yes. Who does the work of irons? Oh, very good. A man who work of iron. Yes, blacksmith Yes, is ma'am. a person who makes things of iron, lohar. You know who's a cobbler? Yes, Who ma'am. make our Yes, shoes? ma'am. Okay. Yes. Who makes our shoes? Yes, good. So अब जो है the king's Who prepared our shoes. bailiffs. So now this lady, she puts the blame on the goldsmith. Goldsmith did not make her jewelry on time. Goldsmith को उसने कुछ गहने बनाने के लिए दिए थे
और वो जो है हर रोज उसको कल कल के नाम पे उसको रोज बुलाता था, and that is the reason she gave that this goldsmith, he is a lazy scoundrel. Scoundrel means, yesterday I told you the meaning. Tell me the meaning of scoundrel. Hello, hello. Dishonest person. A dishonest person. Okay, good. Anushka is paying good attention. Anushka, you answered na? Scoundrel. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, those So Anushka, you are concentrating very good. So scoundrel means a dishonest person. He said that uh, she said that the goldsmith was a dishonest person, and he did not make my jewelry on time. He kept on postponing that, come tomorrow and come tomorrow. That is why I had to walk so many times. Now the king passed order, go and bring the goldsmiths to me, the bailiffs. Bailiffs means the law officers. Write the meaning of bailiffs. Bailiffs means law officers. Whatever meaning I'm telling you, I'm going to ask you orally also. If you want to improve your language, you have to improve your vocabulary. It's very important. So the king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, accusation matlab आरोप, accusation means The charge of offense. the charge of offense. हिंदी meaning बोल दिए कि समझ आए, the charge of offense. The accusation against him, he had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. Now, the goldsmith had his own reasons. He accepted his fault. He accepted his fault. He said that, yes, it's true that I made her come many times. I gave her excuses. वो इसलिए क्योंकि जो है मुझे एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर आ गया था, रिच मर्चेंट का ऑर्डर आ गया था, क्योंकि मर्चेंट के घर में शादी थी. आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर. दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट. They had a wedding coming and they wouldn't wait. He said that in between, a rich merchant gave an order because there was a marriage in their family. And you know how impatient rich men are. Rich men, they think themselves to be very powerful, very influential. You know how impatient rich men are. रिच लोग जो है अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, वो बहुत इम्पेशेंट है, वो किसी के लिए नहीं रुकते हैं, है ना. इम्पेशेंट मतलब बेसब्र. पेशेंट, पेशेंट का दो मीनिंग होता है. हाँ, पेशेंट, वन पेशेंट मतलब मरीज, और एक पेशेंट बेताब. सब्र करना. बी पेशेंट कहते हैं ना, बी पेशेंट मतलब सब्र करो. तो यहाँ जो है इम्पेशेंट मीन्स नॉट हैविंग पेशेंस, बेसब्र. तो वो रिच मर्चेंट जो है उसको किसी और की फिक्र नहीं थी. पहले किसने ऑर्डर दिया मुझे नहीं पता, मेरे घर में शादी है, मुझे जो है ज्वेलरी एकदम टाइम पे चाहिए. Rich people are very bossy, very proud. So this merchant was also very proud. तो goldsmith ने कहा मैं क्या करता कि मुझे जो है rich merchant के दबाव में जो है इस लेडी को बार बार दौड़ाना पड़ा. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Now the king asked, you tell me the name. Tell me the name of this rich merchant जिसने जो है इस गरीब औरत के काम को रोक के रखा. Who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted the bricklayer. और इसके कारण this lady walked up and down, और उसके कारण जो है वो bricklayer का ध्यान जो है वो distract हुआ, which made a mess of his wall. Because of this, he made a weak wall.
which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? बोला नाम बताओ उसका कि कौन से मर्चेंट ने दबाव देके तुम्हें ज्वेलरी बनाने के लिए कहा, जिसके कारण इस पुअर वुमेन का तुम काम टालते रहे. The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब गोल्डस्मिथ ने मर्चेंट का नाम दिया. अब वो मर्चेंट कौन था? वही मर्चेंट, the same merchant whose house had been burgled and whose wall had fallen on the thief. See, एकदम गोल गोल घूम के फिर वो उसी मर्चेंट पे आ गया. Hello, can you hear me, all of you? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Voice is clear? Hello. Hello, is my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. So now he said that, can you name him? हाँ, तो गोल्डस्मिथ ने उसका नाम लिया. And this man was the same merchant whose wall had fallen on the robber and killed him when he was rudely summoned back to the court. अब जो है राजा का गुस्सा एकदम ये पे चल रहा था. ये तो दो बार कल्प्रिट ये हो गया. ये was rudely called back to the court. He arrived crying. अब तो इस मर्चेंट को कोई होप ही नहीं था. अब क्या करे, अब किस पे ब्लेम दे. तो अब जो है वो रोते हुए आया, because he probably thought that now he is going to be punished, he is going to be killed. So he came to the court crying, it wasn't me but my father who ordered the jewelry. अब उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं ऑर्डर किया था, मेरे फादर ने ज्वेलरी ऑर्डर किया था. He is dead, I am innocent. He said that it was not I who had ordered the jewelry, it was my father who had ordered the jewelry. He is dead, I am innocent. He said that my father has died now and I am innocent. मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ. Innocent means not guilty. Innocent is the opposite of guilty. So I am not guilty. निर्दोष. Innocent का हिंदी मीनिंग होता है निर्दोष. English meaning is not guilty. But the king consulted his minister and ruled decisively. Now this king, he consulted his minister. उसने अपने minister से सलाह मशवरा किया और decisively. It's true your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. It is true your father is the true murderer. The king consulted his minister and ruled decisively. Decisively means एकदम firm, एकदम पूरा एकदम निर्णय, strong decision ले लिया. तो उसने कहा कि your father is the culprit and he is dead, but somebody must be punished in his place. अब मरे हुए आदमी को तो punish कर नहीं सकते हैं. अब किसी न किसी justice तो मिलना चाहिए thieves brother को. So someone must be punished. So you have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. उसने कहा कि तुम्हारे फादर का जितना भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हें मिला. Inherit means to get something from your father. Inherit कुछ. तो उसने कहा कि you have got the property from your father, so you have to get his sins also. Sin मतलब होता है some bad, हाँ, bad immoral work. हिंदी मीनिंग पाप. sin मतलब पाप. तो उसने कहा कि जो है तुमने अपने फादर का सारा जो है वेल्थ प्रॉपर्टी लिया है, सारा धन तुम्हारे फादर का तुम्हें मिला, तो तुम्हारे फादर के पाप भी तुम्हारे ही हिस्से आएंगे. You have inherited all the money from your father, all the wealth from your father. So who will take responsibility for the bad work that he has done?
So who will take responsibility of the bad work? I knew at once, even when I first set eye on you, that you were the root of his horrible crime. अब राजा का सारा गुस्सा जो है इसी मर्चेंट पे निकला. उसने कहा कि फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था, I first set eyes on you. I knew that you were at the root of this horrible crime. इस क्राइम के पीछे तुम ही हो, तुम ही जड़ हो इस क्राइम के. इस क्राइम के तुम ही जड़ हो. मुझे पहले ही पता चल गया, पहली नजर में. You must die. As he ordered a new stake to be made ready for the execution. Stake means a post or pillar. लकड़ी का एक खंबा जहाँ किसी को पनिश किया जाए, जहाँ पे खड़ा करके. तो उसने कहा कि एक स्टेक बनाया जाए, नया स्टेक फॉर द एग्जीक्यूशन मींस पनिशमेंट. तो he said कि now it is final. This man is the final culprit. It has been proved. His father is dead, and so he must be punished for his father, because he has taken all the wealth from his father, got the wealth from his father. So he should also be accountable for the bad work that he had done. So this man will be hanged. तो एक नया जो है पोस्ट पिलर बनाया गया, वुडन पिलर, जहाँ पे उसको सजा दिया जाए, डेथ पनिशमेंट. As the serpent sharpened the stake and got it ready for the final impaling. Impaling means piercing a sharp weapon. तो किस तरह से उसको मारा जाना था. कोई शार्प वेपन जो है, कोई शार्प वेपन से उसको मारा जाना था. So impaling. Impaling means killing by piercing a sharp weapon. So now push a sharp pointed post through something. So now arrangements were being made कि इसको जो है कैसे मारा जाए sharp weapon. तो and got it. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब जो है जब उन्होंने देखा तो देखा कि वो जो पोस्ट था, स्टेक खंबा जो था जहां पर खड़ा होके उसको मारना था वेपन से, वो जो है बहुत मोटा खंबा था, और ये जो मर्चेंट था वो एकदम दुबला पतला था. वो उस खंबे में फिट ही नहीं आ पा रहा था. So what it occurred that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. उस खंबे पे जो है, उस पोस्ट पे, stake means the post, on that post this merchant would not fit because the post was very fat, whereas this merchant was very thin. So it occurred the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब मिनिस्टर ने जो है वो किंग को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा कि खंबा तो बहुत मोटा है, ये आदमी तो उस पे फिट ही नहीं हो रहा है. तो the king too worried about it. अब जो है राजा भी उतना ही बेवकूफ था. खंबे को तो बदला जा सकता था, लेकिन उसके दिमाग में तो वो आया ही नहीं. They were all foolish people, not able to take the right decisions. The king too worried about it. What shall we do? He said. उसने कहा कि क्या किया जाए, अब ये खंबा मोटा है, अब आदमी पतला है, इसको कैसे इस पे फिट होके, इसका तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे पनिशमेंट. What shall we do? He said. When suddenly it struck him that they needed to do was to find a man fit enough to fit the stake. Now look at the foolish king and the minister.
खंबा मोटा है तो खंबा को पतला नहीं करेंगे। अब किसी ऐसे आदमी को खोजो जो खंबा में फिट आ जाए। So this proves how foolish they were, extremely foolish. So they were extremely foolish kings and ministers. So when they saw that the stake was very fat and the man was thin, instead of thinning the stake, they said that fat man should be searched to fit the stake. अब जो है राजा ने ऑर्डर दे दिया कि जाके मोटे आदमी को खोज के लाओ, कि ऐसा मोटा आदमी जो कि इस खंबे में फिट हो। फाइंड अ फैट मैन इनफ टू फिट द स्टेक। सजा तो देना है, गलती हुआ है तो सजा देना, किसी को भी दे देना है। जरूरी नहीं है कि कल्प्रिट ही हो, बस to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town. अब जो है सारे सर्वेंट्स को जो है भेजा गया पूरे टाउन में खोजने के लिए कि जाके खोजो कि मोटा आदमी, ऐसा मोटा आदमी खोजो कि जो कि वो इस स्टेक पे फिट हो जाए। For a man and their eyes fell on the disciple who had fattened himself. तो मोटा आदमी सबसे कौन था उसी ये में? वो डिसाइपल था। वो खाने के लिए रुक गया और खा खा के वो एकदम मोटा हो गया। बनाना, राइस, व्हीट, घी, सारे कैलोरीज वाले खाना एक डुड्डू में सब मिल रहा था। उसने खा खा के सब एकदम became very very fattened. Bananas, rice, wheat, ghee, everything he ate and he became very very fat. And the eyes of the servants fell on this fat disciple. अब उसने उसको पकड़ लिया। अब ये डिसाइपल तो एकदम हक्का बक्का रह गया। What have I done wrong? उसने कहा कि मैंने क्या गलती किया? I am innocent. मैं निर्दोष हूँ। What have I done wrong? I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it is the royal decree. Decree means order. उसने कहा कि राजा का ऑर्डर है, हो सकता है तुम निर्दोष हो, लेकिन राजा का ऑर्डर है कि किसी भी मोटे आदमी को पकड़ के लाओ। तो it is the order. Decree means order. Write the meaning of decree. Decree C है, डिग्री से मत कंफ्यूज करना। It is order. तो वो बहुत ये उसने विनती किया, लेकिन जो किंग के सर्वेंट्स थे उन्होंने कुछ नहीं माना और उसको वो एग्जीक्यूशन पनिशमेंट देने के जगह पे ले गया। अब जो है डिसाइपल को अपने गुरु का बात याद आया। Now he thought that really my guru had warned me. While he was waiting for his death, he prayed to his guru, his heart asking him to hear his cry wherever he was. और वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरे गुरु को किसी तरह मेरे मदद के लिए भेज दीजिए। अब गुरु जो है बहुत पहुंचे हुए आदमी थे, बहुत ये he was very talented. So he immediately when his disciple remembered him for help, he could see his vision. उसने अपने ये से देख लिया कि मेरे डिसाइपल जो है कुछ मुश्किल में है। उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स थे, तो अपने मैजिकल पावर्स से उन्हें पता लग गया कि उनका जो फॉलोअर है वो कोई मुश्किल में है। He could see the future as he could see the present and the past. So visualize everything. तुम्हारी माँ को समझ नहीं आता है। Hello. So he could visualize everything. He could visualize the trouble of his disciple, and he could see everything in his vision. तो वो गुरु जो है अपने डिसाइपल को बचाने के लिए वो वहां
पहुंच गए। गुरु जो है अपने डिसाइपल को बचाने के लिए वहां पहुंच गए। Who had got himself into such a scrape? Scrape means a difficult situation. Scrape. So what is the meaning of scrape? Write the meaning of scrape. Scrape means a difficult situation. तो अब डिसाइपल जो है वो अपने आप को एक मुश्किल में वो पड़ गया था अपने बेवकूफी से। You could see got himself into a difficult situation through love of food. कैसे उसने अपने आप को एक मुश्किल में डाल दिया था अपने खाने के प्यार के कारण। लव ऑफ फूड, कहते हैं ना कि कोई भी चीज की अति जो होती है वो खराब होती है। लालच करना बुरी बात है। लालच करना बुरी हाँ, बात है। yes, very good. Greed is great evil. Greed is great evil. लालच बुरी बला है। There are many stories also related to this greed. A dog who saw Yes, ma'am. his shadow in the dog. reflection, और उसने सोचा कि इस कुत्ते का भी ये मिल जाए मुझे तो। Greed is हाँ, फॉक्स वाला मैम। फॉक्स नहीं, डॉग, कुत्ते को मिला था। Dog. वो पुल से जा रहा था, नीचे देखा अपना परछाई कि दूसरा कुत्ता। या मैम मैम। हाँ, तो greedy disciple, greedy disciple got into trouble because scrape means a difficult situation. This greedy disciple, he got into trouble because of his love of food. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. सबसे पहले गुरु को गुस्सा तो आया कि मैंने तुम्हें बोला था कि बेवकूफ लोग हैं, कभी भी कुछ भी खतरनाक कदम उठा सकते हैं। Then he went to the king and addressed him. O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? तो अब जो है वो गया गुरु के पास। वो गुरु जो है वो राजा के पास गया और बोला कि गुरु और डिसाइपल में बड़ा कौन होता है? हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा होता है, गुरु और द डिसाइपल? Guru. ऑफ कोर्स, Guru. नो डाउट अबाउट इट। तो राजा ने कहा कि गुरु ही गुरु। सबसे बड़ा होता है, इसमें क्या डाउट है? Why do you ask? Then put me to the stake first. उसने कहा कि गुरु बड़ा होता है तो डिसाइपल क्यों पहले मरेगा? मुझे जो है वो पोस्ट पे ले जाके मारिए पहले। Put me to the stake first. So if the disciple is greater than the guru, the disciple should be, yes, if the guru is greater than the disciple, the guru should be punished before the disciple. Put my disciple to death after me. मैं मर जाऊंगा उसके बाद आप उसको भी मारिएगा, लेकिन मुझे पहले मारिए। Put my disciple to, you can see in the picture, गुरु मोटा, डिसाइपल एक तरफ राजा और मंत्री, राजा मंत्री, गुरु और उसका डिसाइपल। So when the disciple heard this, he understood and began to clamor. Clamor means shout. Clamor. Clamor means loud sound. यहाँ मतलब shout. और disciple जब वो Demand something. demand something मतलब जोर जोर Demand something. Loud. से ये करके कुछ ये करना। तो मैम साउथ। शाउट भी हो सकता है, एक वर्ड को आप अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे सैड है तो अनहैप्पी भी बोल सकते हैं। तो सिमिलरली यू कैन से शाउट ऑल्सो, मुझे चाहिए, जोर से हल्ला करना। तो यही क्लैमर हुआ, मुझे मारो, मुझे। तो he started shouting, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. So the disciple started insisting, shouting that he should be killed first.
The guru and the disciple now got into a fight. Now what happened? Both of them started fighting. गुरु और ये जो है डिसाइपल दोनों लड़ने लगे कि मुझे पहले मरना है, मुझे पहले मरना है. About who should go first? The king was puzzled by his behavior. और राजा का तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था. This is the first time a person is fighting to die. Usually, persons fight to escape death. What is the case over here? Over here, both the king and the disciple are fighting to die first. What a strange thing. So the king is extremely surprised. Put me to death first, replied the guru. Now guru is telling, put me to death first. And disciple is telling, put me to death first. So there is we chose him because we needed the guru now got into a fight. The king was puzzled. He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for a stake. तो उसने कहा कि उसको बहुत आश्चर्य लगा. He asked the guru that why do you want to die? हमने तो इस आदमी को पकड़ा क्योंकि हमारा स्टेक जो है वो बहुत मोटा था. मोटे पोस्ट पे मोटा आदमी ही फिट बैठता, तो इसलिए हमने इसे चुना. और तुमको क्यों मरने का मन है? तो you shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. तो गुरु ने कहा कि मुझे ये सब सवालों का जवाब नहीं देना है, बस I want to die first. Put me to death. अब why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. अब राजा ने सोचा कि कुछ तो सीक्रेट जरूर है. There is some secret. क्योंकि ऐसे तो कोई मरने के लिए, as a wise man, you must make me understand. तुमको जो है मुझे, आपको जो है मुझे बताना पड़ेगा कि आपको क्यों मरना है. कुछ तो ये है, कुछ तो है सीक्रेट कि आप पहले मर रहे हैं. Will you promise me to put me to death if I tell you? तो गुरु ने कहा कि ठीक है, I will tell you the reason why I want to die, but you have to put me to death first. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर आपको मुझे पहले सजा देना होगा. The king gave him his solemn word. Solemn means serious and is silent. Right? The meaning of solemn, serious. मतलब serious उसने promise दिया, सच्चा promise. Solemn, serious. The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him. गुरु जो है उसको अलग ले गया. Aside मतलब क्या? Aside मतलब थोड़ा अलग ले गया. Earshot means जहां से वो सुन नहीं सकते थे. Out of the servant's earshot means to the place where the servants could not hear him. Out of the servant and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? उसने कहा कि आपको पता है कि हम लोगों दोनों को क्यों मरना है यहाँ? क्योंकि हम लोगों ने बहुत जगह ट्रैवल किया, लेकिन इतना अच्छा जो सिटी था वो कहीं नहीं मिला. इतना अच्छा. Earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. उन्होंने कहा बहुत जगह हम गए, लेकिन आपके जैसा राजा और आपके जैसा मंत्री कहीं नहीं मिला. आप लोग जो है वो यूनिक हैं. The stake is the stake of the God of justice. और ये जो पोस्ट है, ये पिलर जो है जहाँ पे लोगों को पनिश किया जाता है, ये एक बहुत ही पवित्र पिलर है. तो the guru and the disciple, they have planned how to fool the king and the minister. It is not difficult to fool foolish people. उनको कुछ भी आप दाया बाया बोल दो, वो विश्वास कर लेंगे. तो
डिसाइपल और गुरु को पता था कि ये बेवकूफ राजा और मंत्री को बेवकूफ बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, तो उसको नहीं होता फ्लैटरी, फॉल्स प्रेज, झूठी तारीफ करने लगे कि पूरा दुनिया घूमा, लेकिन ऐसा अच्छा कंट्री जो है कहीं नहीं मिला हमें, ये सबसे अच्छा जो है यूनिक आपका सिटी है। और ये जो स्टेक है, ये जो पिलर है, वो एक बहुत ही पवित्र, this is it's a very holy, it's the god of this pillar is the pillar of god of justice. It's new, it has never had a criminal on it. और वो ये क्यों इतना sacred है, इतना holy? क्योंकि till now no one has been punished on this stake. We already know कि राजा ने नया स्टेक बनवाया था, तो उसने कहा कि it is holy because it never had a criminal on it. Whosoever dies on it will first be reborn as the king of his country, and whosoever goes next will be the future minister of his country. उसने कहा कि मुझे पता है, मैं सन्यासी हूँ, कि ये बहुत एक पवित्र पिलर है, और इस पे जो सबसे पहले मरेगा वो अपने अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो दूसरी सेकंड टाइम मरेगा, जो सेकंड बार मरेगा, तो वो जो है मंत्री बनेगा. See how cleverly the guru and the disciple are fooling the king and the minister. So he says, who will die first on the pillar, he will become the king in the next life. And who will die the second time on the pillar, he will become the minister in the next birth. तो हम लोग जो है अपने अगले जन्म के लिए प्लान्स बना रहे हैं. We are sick of this ascetic life. Ascetic means simple life without any luxuries. तो सन्यासी लोग जो है सन्यासी सिंपल विदाउट लग्जरीज. उन्होंने कहा कि हम जो है एकदम सिक हो गए ऐसा सिंपल लाइफ जीते जीते. वी सिक ऑफ आवर ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. तो हम लोग जो है, हम लोग भी जो है अपना एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ किंग और मिनिस्टर के तरह. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. उसने कहा कि आपने प्रॉमिस किया था, हाँ पहले ही उसने प्रॉमिस ले ली. So now time is up. I'll end the class. Homework I will send on the Snap homework group और ये WhatsApp group. Okay, is it clear to all of you? Hello. Yes, ma'am. कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. अटेंडेंस ले ली हो भाव्या? हेलो भाव्या, प्रेजेंट? हेलो. No, ma'am, she's not. हाँ Ma'am, she is not. क्या? She is not present. Not present. So anyone can take. कोई भी ले लो अभी. हेलो. Yes, ma'am. कौन लिए हो बता दो हमको. Ma'am, me. निर्भय, अनुज, कोई ले लो एक. हम ले लिया मैम. ठीक है. Okay. Thank you.